today we start with the concept of the OOPS concept part 2. Means here we are going to talking about the relationship between the classes. Class ଭିତରେ ଆମର କଣ କଣ relationship ରହିବ ତାକୁ ଆମେ compare କରିବା. So how can I identify the relationship between the classes? तो ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା को ନେଇକି ଆମେ guess କରିପାରିବା what is the kind of relationship between them. Suppose when we are talking with our father, we are talking in more respective ways. बाबाଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଧିକ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଜୁଆଲ ରହିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କାଜୁଆଲ ରହିବା. ତ when we are talking to any person ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବି guess କରିପାରିବା what is the kind of relationship is there. So from this you have to identify the relationship between the classes. Class ଭିତରେ ଆମେ relationship ଏଠି ପାଇପାରିବା. So let us understand the and identify the relationship between the classes. What are the different kind of relationship between the classes are present? Class ଭିତରେ कौन कौन relationship अछि देखिबा. One is composition relationship, generalization relationship, utilization relationship and instantiation relationship. So four type of relationship we have. One is composition, generalization, utilization and instantiation. Composition relationship माने आमे देखिबा चीनी गोटे आइटम नवा, चीनीटा आमे खीरी रे पकई परिबा मिठा लागिबो, चीनीटा शरबत रे पकेइबा मिठा आसीबो. तो चीनी गोटे आइटम जोटा कि हमर सबुतरे मिक्स अप हे जाउची आ तादर आमे सब आइटम गुडा को आमे पाई परिबो. The composition relationship is just like that. And it is composed of other item. And other items it is composed right. One is generalization relationship, utilization relationship and instantiation relationship. Relationship between the object. And composition hame jodi kahiba, it is composed of any other item. Mixture, different type of jinsa सब मिसिक रहउची ताको सेति पे मिक्सचर कहउची. डालमा जेतबे बना होची आलू गोटे आइटम देखिबा सेटा सबुतरे कंपोज्ड रहउची. आलूटा डालमा रे मिसी ताको डालमा कहबा. आलूटा विभिन्न प्रकार तरकारी रे मिसी, चिकन तरकारी रे मिसी, मटन रे मिसी, पनीर रे मिसी. So there is a composed. Okay, तो एडी देखिबा गोटे एग्जांपल कंपोजिशन रिलेशनशिप रे हमें कोन कहबा. Composition relationship, object include another object as its part is called as the composition relationship. गोटे ऑब्जेक्ट आ गोटे ऑब्जेक्ट को तार पार्ट रे रखिबो. जेमते कि हमें तला ऑनलाइन शॉपिंग करूची, ऑनलाइन शॉपिंग रे से कंपोज कोन करूची ना डिफरेंट यूपीआई ऐप को तारे इंक्लूड करूची, फोन पे को इंक्लूड करूची, गूगल पे को इंक्लूड करूची, तापरे पेटीएम को इंक्लूड करूची, डिफरेंट टाइप ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को से सपोर्ट करूची. ताले जाके हमें कोन करके ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे हमें किसी जिनस आइटम मगे पारुची कोटे ऑनलाइन रो हमें मगे पारुची. सो देखो ए जो यूपीआई जिनस गुडा का रहिला एटा शॉपिंग साइट रे भी रहउची, हमें जतर मोबाइल रिचार्ज करिवा सेठी भी रहउची यूपीआई ट्रांजैक्शन रहउची. तो डिफरेंट पर्पस रे बा डिफरेंट जगह रे हमें एटा डिफरेंट वे रे यूज करिबाउची. ऑब्जेक्ट इंक्लूड द अनदर ऑब्जेक्ट एज इट्स पार्ट, so it is called as has a relationship. आगो कहबा has a relationship when object include another object as its part. बुझी पाला ना बुझी पाला ने. जेमते कि देखो एटी रहला कार, कार रे रहला गोटे इंजिन. आमे जदी कार भितरो इंजिन टा को काढी दवा तल कार रो बॉडी रो किछि काम नै. आ जदी बॉडी टा काढी दवा आ इंजिन टा खाली आमे धरे कि जीवा तले आमे ताको कहि परिबनी कार. कार रो इंजिन टा को धरे कि आमे कहिबनी एटा बीएमडब्ल्यू रो इंजिन काढ दवा कहबा एटा आमे बीएमडब्ल्यू नै कि जाउछे. तो वी कैन नॉट से दैट. केमते बीएमडब्ल्यू जदि आमे इंजिन टा कर दवा खाली डब्बाटा रहिबो आमे ताको कहि परिबनी जे एटा बीएमडब्ल्यू. से गाड़ी तो चलीबो ना, आमे इंजिन तो बाहर कर देछि. इट इज कॉल्ड द has a relationship. Object includes another object as its part, it contain a has a relationship. बुझी पालो कंपोजिशन टा. Yes, sir. Yes, sir. तापर हमें आसीबा generalization relationship. In generalization relationship, class inherit commonly used state and behavior from other class.
each class allowed to inherit from multiple classes. अच्छा जेमते कि देखो आमे कौन करूचे ना हमर जेजे बापा ठारो बापा आसले बापा ठारो आमे आसिले तो समटाइम जेता छोटो छुआ जन्म होते आमे कहबा ये बापा को भली देखा जाउची ये मां को भली देखा जाउची ये दादा को भली देखा जाउची that means the kid face is matched with the parents से किछि फीचर जोटा पेरेंट कर कॉपी करी थे आ किछि तार निजर भी फीचर रही थे बा निजर गुण रही थे आमे जति देखबा अण जेजे बापा जो थिले सेमानकर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जति आमे देखिबा से माने 7th 8th पास कि 10th पास जाई जाइथिबे बट नाउ आमे तांकर वंशज आमे तांकर सब फीचर बा सब जिनस कॉपी करिचे बट आमे देखिबा हमर क्वालिफिकेशन हमर हाइट थियो सो वी आर इन द बीटेक एमटेक ए सब रही थियो दैट मींस वी copy the functionality of the parent the classes inherit commonly used state and behavior from other class each class allowed to inherit from one or multiple classes जेतेबेले हमर आसिला विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम रे गोटे जीयूआई इंटरफेस हम पाखु आसिला एक्सपी टा रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर सिस्टम को पूरा चेंजेस कर देला कंप्यूटर वर्ल्ड को ही से चेंज कर देला तो एक्सपी रे ही स्टॉप हे जिनतला एक्सपी रो किछि फीचर को से कॉपी करी कि विंडो 7 को आसिला विंडो 7 रो विंडोज 8 विंडो 8 रो 10 10 रो 11 तो आमे जेते जेते फीचर आमे आगु को बढ़ी बढ़ी का गले दैट डजंट मीन से फीचर गुडा को बा पूर्व फीचर गुडा को रहिलानी पूर्व फीचर गुडा के भी रहिला आउ प्लस ता भीतर कोन हला ना किछि नुवा एडिशनल फीचर भी ऐड हला किंतु देखिबा आमे जतले 10 को जिबा किबा 11 को जिबा से एक्सपी रो किछि जिंस कॉपी करिछि 7 नो किछि जिंस कॉपी करिछि जेमति कि जतले 7 आसिला से एक्सपी रो किछि जिंस कॉपी कला जतले विंडोज 8 आसिला से विंडोज 7 नो कॉपी कला विंडो 10 जतले आसिला से 8 रो फीचर कॉपी कला 11 जतले आसिला से 10 नो फीचर को कॉपी कला त एमति देखिबा गले इनडायरेक्टली सब विंडो एक्सपी रो आसी तो आमे जो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो आमे आसी गले कोठी की विंडोज 10 जे आसी गले किंतु गोटे गोटे वर्जन विंडोज 7 रे हमर चारि प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम बाला जंत कि जेतरा विंडोज 7 मार्केट को आसिला विंडोज 7 बेसिक रे रहिला बेसिक रो तापर हे गला विंडो 7 प्रोफेशनल प्रोफेशनल रो हे गला अल्टीमेट तो एमते डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम पाखु आसिला तापर नेक्स्ट जेतला हमें देखिबा आउ other operating system okay so से जगह कौन हला ना विंडो 8 विंडो 10 एमती ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर करी चलला एमती तो सब जो फीचर सब आसिला माने विंडो 8 रे विंडो 8.0 रहिला पुनी 8.1 रहिला तो ए जो कांसेप्ट जो सब रहिला एटा को कहिबा हमें जनरलाइजेशन माने से कौन कला तार फीचर टाकू से शेयरिंग कला अन्य को विंडो 7 ता फीचर को शेयर कला विंडो होम रो ता फीचर शेयर है कि विंडो अल्टीमेट हला अल्टीमेट रो विंडो प्रोफेशनल हला तो एटा को कहा जीवो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप तो क्लासेस inherit commonly used state and behavior from other classes each class allowed to inherit from one or multiple classes structure and behavior that is common to different class are combined to form a super class एटी हमर कोन आसीबो ना गोटे सुपर क्लास आसीबो सुपर क्लास माने हमें कहबा जे फंक्शनलिटी को शेयर कला हमें कहबा हम बाबा होचनी सुपर क्लास जे बाबा होचनी सुपर क्लास तांको टू हमें फीचर कॉपी करे सुपर क्लास कोन करे तार जो फंक्शनलिटी अछि से चाइल्ड क्लास को दिए कॉपी करिया पे चाइल्ड क्लास कोन करे पेरेंट क्लास रो फीचर गुडा को एक्सेप्ट करी तार नुवा फंक्शनलिटी से ऐड करे सब क्लास इज कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सुपर क्लास तो सब क्लास इज कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड क्लास सुपर क्लास इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड क्लास स्पेशलाइज्ड माने से निजर किछि फीचर निज पाकर रखला स्पेशलाइज्ड जनरलाइज्ड माने से शेयरिंग कला फंक्शनलिटी को जो जनरलाइजेशन helps to create a program that can be customized in accordance with the new requirement generalization अर्थ होचे आमे existing software फीचर को कोन करिबा ना बढ़ेवा
by adding the new functionality on it माने parent कर जो गोटे जमी थिला आमे धर ताको जदि डिवाइड कर दबा ताले तो कमी जी आमे दे आउ किछि किनि के ऐड करी चलीवा दैट मींस वी आर जनरलाइज माने आमे ताको भी नेले आमे निजे किछि भी ऐड करले तो स्पेशलाइजेशन माने आमे पेरेंट क्लास रो किछि जिंसा फीचर कॉपी करबा as well as आमे निजे किछि फीचर रखिबा जेमते कि विंडोज 7 विंडो 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम थिला बे विंडोज 11 आसिला विंडो 11 जेतला आसिला से 10 नो किछि फीचर कॉपी कला प्लस निजर किछि से फीचर रखिला तो सेति पय को कुआ गला कोन जनरलाइज क्लास तो जनरलाइज हेल्प्स टू क्रिएट ए प्रोग्राम दैट कैन बी कस्टमाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द न्यू रिक्वायरमेंट तो जनरलाइजेशन कोन कला ना a feature it is customized so it helps to create a program that is customized in accordance with the new requirement हिसाब रे आमे सी कोन कला निज फीचर टाको बढ़े बाटी चला स्पेशलाइज कोन कला पेरेंट क्लास रो कॉपी कला आ प्लस निजर फीचर को से रखिला बुझिला Yes, sir. तापर होचे हम देखिबा utilization relationship class uses the another class is called the utilization relationship जेमति कि हमें कहिबा हमर यूटिलाइज करिबा जमको यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप हमर गाड़ी चलेया पई फोर व्हीलर चलेया पई हमें ड्राइवर को हायर करिबा सो ड्राइवर इज ए वन क्लास सो इट इज यूटिलाइज हियर जेमति कि हमें यूज कले कम ना फोन पे गूगल पे रे जो पेमेंट हमें करूचे एटा कोन हला ना फोन पे यूटिलाइज काहा को करूचे बैंक को यूटिलाइज करूचे तापर जे ट्रांजैक्शन जदि से बैंक रो अकाउंट को यूज जदि न करिबा फोन पे रो किछ एक्जिस्टेंस रहिबनी गूगल पे रो किछ एक्जिस्टेंस रहिबनी तो से जो फोन पे गूगल पे जोटा रहिला से कोन कला ना हमर यूज कला काहा को यूज कला ना बैंकिंग रो अकाउंट्स गुडा का यूज कला सेति पई फोन पे गूगल पे हमर एनहांस हला तो क्लासेस यूजेस द अनदर क्लास तो सेटा को हजिबा हमर यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप इंस्टेंशिएशन रिलेशनशिप का कहबा relationship between a class and instance of that class relationship of class and instance of that class is called as the utilization relationship instances माने सॉरी instantiation relationship अर्थ होची धरा एटा जति जावा क्लास हला you are the instance of class or you are the part of the class जेमति हमें कहबा एटा मोर मोबाइल फोन एटा मोर लैपटॉप एटा मोर डेस्कटॉप that means this laptop desktop is belongs to me so that is called the instantiation relationship there is the instance of that class a relationship between a class and instance of the class eta la java class so that we are learning here java so we are called as the instance of class or we are called as the part of the class so that it is called as the instantiation relationship between a class and instance of that class is called as the instantiation relationship बुझिला तुमने बुझिला आयुष आगे सर so based upon this our inheritance has come inheritance means हमें कौन करिबा we share the common structure and functionality of one class to the another class by adding the new functionality on it inheritance अर्थ होची हमें गोटे नुवा क्लास क्रिएट करिबा by adding the new functionality on it so we create a new class by adding the new functionality from the another class माने parent class कहिबा means we enhance the functionality of the parent class by adding the new functionality in the child class so that is called as the inheritance so right what is inheritance देखो
So in inheritance, we enhance the functionality of the existing class. We enhance the functionality of existing class by adding the new functionality on it. Yes, sir. Okay, so what is the important factors are present in inheritance? First is superclass. Superclass means a class from where the attributes are derived or where the functionalities are is extends. Subclass means then gives an ending subclass Sir, is derived. Okay. Like a subclass. The class that inherits from other class is called subclass. It extends the functionality of they extend the functionality of existing class. yes, sir. Okay. The inheritance ଆମେ जो पढ़िबा inheritance is of three type. One is single inheritance, multiple inheritance, and multi-level inheritance. So inheritance is of three type: single inheritance, multiple inheritance, and multi-level inheritance. So three type of inheritance we have: single, multiple, and multi-level. Now thing is what, like in single inheritance, it
extend the in single inheritance, it derive the set of attribute from one parent class. So right, types of inheritance, keeps on adding types of inheritance. First is single inheritance, multiple inheritance, and multi-level inheritance. Okay, so there is a three type of inheritance we have, but Java doesn't support multiple inheritance. Java multiple inheritance support করে নাই. Java only support the single inheritance. Java doesn't support the multiple inheritance. Java only support the single inheritance. Java only support single and multi-level. Java doesn't support multi-level, multiple inheritance. Java multiple inheritance support করে নাই. তাহলে লেখো Java doesn't support multiple inheritance. Then যদি multiple inheritance support করনি তো জাভারে ଗୋଟେ feature ଅଛି interface, तो interface through रे ही java multiple inheritance टाको support करे. So by using of interface it support multiple inheritance, but Java doesn't support multiple inheritance. In the case of interface it support the multiple inheritance. Okay, in Java interface support multiple inheritance. Yes, sir. Single inheritance रे कौन होगा देखिए तो এটা যদি parent class है
parent class रो गोटे केवल child class आसी तो one child class derive its set of attribute from one parent class गोटे child class तारा set of attribute and related behavior को extend करिवो from one parent class तो देखो in single inheritance one child class derive its set of attribute and related behavior from one parent class. Okay. So next hoba it was a single inheritance. Multiple inheritance रे कौन आसीबो it child now one child class derive its set of attribute and related behavior from more than one parent class. So one child class derive its set of attribute and related behavior from more than one parent class. So, right? In multiple inheritance, one child class derive its set of attribute and related behavior from more than one parent class. Hello? Yes, sir. Next time देखिबा मल्टी लेवल रे सब बेले कौन हो ये गोटे आसीबो
এটা দ্বারা প্যারেন্ট আসিলা প্যারেন্ট रो এটা আসিলা child 1 ହେଲା child 2 এটা সব child 1 মানে ସବୁବେଳେ child class টা derive হবো to derive class sub child 2 sub child 3 sub child 4. Okay, always parent class is derived to the derived class, so right. In multi-level inheritance, if you go in multi-level inheritance, always the child class is derived always the child class is derived from the derived class. देखिला Yes, sir. ठीक है जी तो नेक्स्ट क्लास रे we can be extend हबो पड़ेगा मंडे दिन